Hello, I OP Srivastava is going to explain you how you can get the equation of line in 3D. I will discuss article as well as some example. In my previous video, I have already discussed regarding unit vectors, addition, subtraction. All these things I have already discussed in detail. If you want to know it in detail, please visit my website. My website's name is sites.google.com/view/om gurukul. And if you have any special problem, please mail me. My mail address is omgurukul2020@gmail.com. Okay, now let us start the article. So let us take question one. What I have mentioned here, मैंने क्या लिखा है? Find the equation of line in 3D whose direction ratio is A, B, C as a symbol. Value is 6 minus 2, 4. And it passes through a point A whose position vector is vector small vector A. Its coordinate can be denoted as x1, y1, z1, but value is 3 minus 4, 5, which can be handle all this from here. You can change, say, now direction ratio becomes 4 minus 2, 6. Similarly, you can change the point as well. Now let us change it 3 minus 6, 5 like that. So this way you can change the values for your practice as well. Now let us understand how you can get it. I will explain article as well as example also. So let us start. Okay. Now what I have mentioned here, मैंने क्या लिखा है? As given direction ratio of line ABC is 4 minus 2, 6, and line passes through the point A whose position vector is small vector A. Point is denoted as x1, y1, z1, and value is 3 minus 6, 5. So vector parallel to the line, vector B will be AI plus BJ plus CK because direction ratio indicates a vector parallel to the line. So we will get AI plus BJ plus CK as a vector parallel to the line. By putting the values given, we get vector B is equal to 4I minus 2J plus 6K. Similarly, line passes to the point A whose position vector small vector is A is equal to x1 y plus y1 j plus z1 k. By putting the value, we get 3I minus 6j plus 5k. Now, let us take a random point P whose position vector is r with respect to origin and its value is xyz. In fact, P is the point which move and generate the line. Okay, now some burning factor. We know that point A position vector, point P position vector. So vector AB is equal to position vector of P means R and position vector of point A, that is small vector A. The vector AP is equal to R minus A is equal to x minus x1I plus y minus y1j plus z minus z1k. By putting the values x1 y1z, we get vector AP is equal to x minus 3I plus y plus 6j plus z minus 5k. Now vector B is parallel to the line. So vector AP, which is line itself, vector AP is equal to lambda times vector B. Means R minus A is equal to lambda B. Means vector R is equal to A plus lambda B is a vector equation of the line which can be written in expanded form. I mean putting the value of we say A and R. X minus x1 I plus y minus y1 j plus z minus z1 k plus lambda times ai plus bj plus ck. Now from given values, taking these equations, vector r is equal to a plus lambda b, the required equation will of the line will be vector r is equal to a का वैल्यू रख दिया 3i, वेक्टर a का वैल्यू है ना 3i माइनस 6j प्लस 5, तो वेक्टर r इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 5k प्लस lambda times vector b यानी 4i minus 2j plus 6k. This is the vector equation of the line. This is the vector equation of the line. ये है आपका vector equation of line.
ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर आर इज द position vector of the moving point, a is the position vector of the point which is given, and vector b is the direction ratio. Now if you expand this, you can write it as r का वैल्यू रख दें xi plus yj plus zk is equal to 3i minus 6j plus 5k plus lambda times 4i minus 2j plus 6k. I have represented all the way which is generally used. मैंने हर तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जिसको जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। अब इसको फिर रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3i प्लस वाई प्लस 6j प्लस जेड माइनस 5k इक्वल टू लेमडा टाइम्स 4i माइनस 2j प्लस 6k। दैट कैन आल्सो बी टेकन एज वेक्टर इक्वेशन। इसको भी वेक्टर इक्वेशन मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, बट जनरली ये दोनों मेथड चलता है, ये और ये। Okay, so this way it is clear how you can get the vector equation of the line. Because if you take any vector parallel to the line, that will serve the direction ratio problem. Okay. Now कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाला जाए वो देखा जाए। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में लिखा है ना, ये वेक्टर r माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स p। r माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स y प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 के lambda b is equal to lambda times ci plus bj plus cj. Now comparing the coefficient of ijk, it is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is the required Cartesian equation of the line. Now if the take the value which is given, the x1 की जगह हो जाएगा -3, वहाँ हो जाएगा y minus y1 y plus 6 हो जाएगा, और z minus z1 की जगह पर z minus 5 हो जाएगा, whole upon 4 minus 2 6, which is the direction ratio. This is the required Cartesian equation of the line. Alright. So this way you can get the Cartesian equation as well as vector equation of a line whose position vector as well as one point on the line is given. So this article is this way. Now let us take another problem. उसमें दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाए हम लेते हैं। ओके, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line in 3D which passes through the points. Point A, position vector is A, coordinate is denoted as x1, y1, z1, value is 3 minus 6 5, and point B, his position vector is B, denoted as x2, y2, z2, and value is 3 6 5 minus 2. So how you can get it, ये कैसे आप पॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं वो मैं समझा रहा हूँ कि एज यू नो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट्स आर ए whose position vector is small a denoted as x1 y1 z1 but value is 3 minus 6 5, and point B position vector given as vector b small, okay, and value is 6 5 minus 2. So from the values given, vector A will be 3i minus 6j plus 5k, and vector B is equal to 6i plus 5j minus 2k. Now let us take a random point P whose coordinate is xyz and direction ratio is vector r. Sorry, let a random point P whose position vector is r and denoted as xyz. Okay, now vector AP, A is on the line, so vector AP will be parallel to vector AB because AB is the points on the line, P is taken already on the line, so vector AP is equal AP parallel to AB
यानी कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी, यानी कि आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए. B is the position vector of B point and A is the position vector of point A. So R minus A is equal to lambda times B minus A. That is the vector equation of the line which passes through two given points. Okay. और इसको अगर हम रीअरेंज करके रखें तो R can also be written R is equal to A plus lambda times B minus A. Sometimes it is 1 plus lambda A plus lambda b are generally written as vector r is equal to mu times vector a plus lambda times vector b, where mu and lambda are certain constant. A and b is the points whose position vector is given. So अब हम दिए गए वैल्यू का यूज कर लें तो वेक्टर r जो हो जाएगा, जो लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो होगा म्यू टाइम्स 3i माइनस 6j प्लस 5k प्लस लेमडा टाइम्स 6i प्लस 5j माइनस 2k. r की जगह क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk. यू कैन राइट इट एज. अच्छा, इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं. इक्वेशन कैन बी आल्सो बी डिराइव्ड एज वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, यानी कि 3i प्लस 11j माइनस 7k. आप चाहे तो देख सकते हैं. ए बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी. बी का पोजिशन वेक्टर है आपका 6i प्लस 5j और ए का है 3i माइनस 6j प्लस 5k. वेक्टर ए बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 6 माइनस 3. तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3i, 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 11j, माइनस 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 7k. सो वेक्टर ए बी निकल गया. वेक्टर ए पी आर माइनस ए position vector of p minus position vector of a, x minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k. After putting the value, we get x plus 3i plus y minus 6j plus z plus 5k. Now AP is parallel to AB, so implies AP is lambda times AB. So when you put the values, we get x plus 3i plus y minus 6j plus z plus 5k is equal to lambda times 3i 3i plus 11j minus 7k. And this way you can represent the vector form of the line. Now कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, वही चीज r माइनस ए, यानी इस वेक्टर को अगर हम लेफ्ट और राइट से कंपेयर कर लें तो आर्टिकल के लिए कैसे समझेंगे. वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए दैट इज एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जे टू माइनस जेड वन के. वेक्टर ए पी आर माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जे वन के. बट ए पी इज पैरेलल टू ए बी, सो ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी. सो हमारे सामने क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वाई. ये लैम्डा बाहर रह जाएगा वो. इनफैक्ट थोड़ा इसको एडिट कर देता हूँ मैं, इसको हम एडिट कर देता हूँ मैं. where it is in fact what I mean to say here, हाँ, x माइनस वाई वाई प्लस लेमडा टाइम्स ए पी. वेक्टर ए पी के बाद से, वेक्टर ए पी के बाद से कहाँ, वेयर इट इज, कहाँ गया, इट इज वेयर इट इज. ओ वेक्टर ए पी इतना, हाँ, प्लस लेमडा टाइम्स प्लस लेमडा टाइम्स ये यहाँ ब्रैकेट छूट गया था. ओके, नाउ it is lambda times x2 minus x1a plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k, and that is all in fact. Okay, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म. अब let us compare I and j coefficient. Then it will be x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon
Z2 minus Z1. That can be taken as lambda as well. So this is the Cartesian equation which passes through the two given point x1, y1, z1 and x2, y2, z2 and x, y, z the random coordinate. Now putting the values which is given, then we will get the required equation as x plus 3 upon 3, y minus 6 upon 11, z plus 5 upon minus 1. X minus x1, x1 is 3, y minus y1, y1 is minus 6, y is minus 6. So it must be 6, plus 6 in fact. ये प्लस 6 हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, दैट इज ओ a little mistake is there, so let me correct it. मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एंड माइनस, ठीक है, लेट इज करेक्ट इट. मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. बट इक्वेशन विल बी x minus 3, y plus 6, z minus 5. वन मिस्टेक इज देयर, लेट मी करेक्ट इट. मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. एक सिली मिस्टेक हो गया है ये, और उल्टा हो गया इनफैक्ट, और कोई गलती नहीं है. So it is y plus z minus 5, y plus 6, and it is one mistake is still there. इसको मैं फिर से टिक कर देता हूँ. It is okay. Now hence required equation will be x minus x1 and x minus 3i, x minus 3 upon direction ratio x2 minus x1. x2 minus x1 will give you x2 is 6 minus 3, और दूसरा डायरेक्शन होगा 5 माइनस माइनस 6 दैट इज 11, और तीसरा आएगा -2 -5 दैट इज -7. x minus x1, x minus 3, y minus y1 यानी y plus 6, z minus z1 that is z minus 5. That will give you the Cartesian equation of the required line. This way you can get the equation of line. First condition when direction ratio and one point is given. In second case when 2 points is given. When 2 point is given, the line equation is equal to r plus, that is the best way to represent. R minus a is equal to mu plus lambda a plus mu into vector a plus lambda times vector b, where vector a, vector b is the direction, sorry, is the position vector of the point a and b. And in Cartesian form, x minus x1, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. So this way you can get the equation of the line when 2 points are given. And in previous way I have already discussed when you can get the equation of line when direction ratio and one point is given. Okay. Okay, thank you for watching the video. And even then you have a doubt, please mail me. My mail address is, I have already mentioned, omgurukul2020@gmail.com. I have a website where you can get each and everything in detail. Site's name is sites.google.com/view/omgurukul. Okay, thank you for watching the video.